Hello everyone, I am going to discuss about resources. What are resources? Resources are the material which have got value and used to satisfy our needs. There are few characteristics of resources: utility, value, depletion or consumption. It means any material which got value और जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करता है, दैट इज़ अ रिसोर्स. इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं. हैविंग व्हाट आर दिस? यूटिलिटी, वैल्यू, डेप्लीशन और कंजप्शन. टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज आर ऑफ थ्री टाइप. नंबर 1 नेचुरल रिसोर्स, नंबर 2 ह्यूमन रिसोर्स and number 3 human made resource. What are natural resource? Natural resources are those resources which get from nature and use without any modification by man. इसको man without modification use करते हैं, जैसे wind, solar energy, air, water. Next is human made resource. Human made resources are those which are made and developed by human to satisfy their need using natural resources. इनके क्या examples हैं? Building, books, roads, vehicles. Next is human resources. We the human beings are resources when human who make the best use of resources and get maximum benefit from it is also an important resource. और इनको हम important resource कैसे बना सकते हैं? By providing them education and training. Example: doctor, teacher, politician, etc. Resources can be classified in the following ways. Number 1 on the basis of origin. Number 2 on the basis of exhaustibility. Number 3 on the basis of ownership, and number 4 on the basis of status of development. Classification of resources on the basis of origin. We can classify resources into two ways. Number 1 biotic. Biotic resources क्या होती हैं? these are obtained from biosphere. Example: forests, animals, birds, their products, fish and other marine organisms. These are some of the important example. Minerals. कौन कौन से mineral? Coal and petroleum are also included in this category. क्यों? Because these are formed from decaying organic matter. Second is abiotic. Abiotic किसको बोलते हैं? Abiotic resources comprise of नॉन लिविंग थिंग्स, जिनके अंदर जान नहीं होती है. एग्जाम्पल्स क्या हैं? लैंड, वाटर, एयर एंड मिनरल्स. मिनरल्स में क्या है? सच एज गोल्ड, आयरन, कॉपर एंड सिल्वर. क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी. इसके बेस पर रिसोर्सेज दो तरह की होती हैं: रिन्यूएबल रिसोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. What are renewable resources? Renewable resources are those resources which can be renewed or reproduced by physical, chemical or mechanical processes. Means ये resources renew हो जाती हैं किस process से? Physical, chemical और mechanical process से. Example: solar and wind energy, water, forest and wildlife. Renewable resources may further be divided into continuous or flow resources. Example: wind and water means these are continuous, they are flowing in the nature. Another is biological resource, which are of two types: natural vegetation and wildlife. Another is non-renewable resources. Non-renewable resources are found over a substantially long geological time. Means ये बहुत सारे टाइम में ये बनती हैं. Example: minerals and fossil fuel.
These can be subdivided into recyclable resources, means इनको वापस recycle करके दोबारा इनको reuse किया जा सकता है, जैसे metals. और दूसरी है non recyclable resources, example fossil fuel, which cannot be recycled and get exhausted with their use. Classification of resources on the basis of ownership. Number 1, individual resource. These resources are owned by a individual. किसी एक person की resource होती है, जैसे plot of land, house, etc. Second is community resource. Community resource जिसको पूरी community के members access करते हैं. Example public park, burial grounds, etc. National resources mean national resources. These are owned by government and its agencies within this political boundaries and territorial water. Example क्या है? Roads, railways, water resource, fossils, forest and wildlife. International resource क्या किसको बोलते हैं? Oceanic resources beyond the exclusive economic zone of country. ये कितनी है? 12 nautical miles. ठीक है. These are known as, ये is example क्या है? Fisheries in international water, minerals in Antarctica. Classification of resources on the basis of status of development. These are 4 types. Number 1, potential resource. Potential resource किसको बोलते हैं? Resources which have not been put to use but are found in a region are called potential resource. किसी रीजन में है, उनके अंदर पोटेंशियल है, बट दीज आर नॉट पुट टू यूज़. एग्जाम्पल राजस्थान एंड गुजरात, इसमें बहुत ज़्यादा सोलर एंड विंड एनर्जी है, लेकिन इसको अभी अच्छे से यूज़ में नहीं लाया जा रहा है. नेक्स्ट इज डेवलप्ड रिसोर्सेज. इट इंक्लूड्स रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड their क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड टू यूटिलाइज. सर्वे की जा चुकी है और उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी भी इतनी अच्छी है कि उसको हम अच्छे से यूज़ कर रहे हैं. एनी रिसोर्स जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, सच रिसोर्स इज नोन एज डेवलप रिसोर्स. अनदर इज स्टॉक. स्टॉक किसको बोलते हैं? द मटीरियल इन द एनवायरनमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट कैन नॉट बी यूज्ड बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी आर इंक्लूडेड अमंग स्टॉक. मीन्स रिसोर्स है, उसकी क्वालिटी भी अच्छी है, क्वांटिटी भी अच्छी है और उसको यूज़ करने के काबिल भी है, बट वी आर नॉट हैविंग टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दैट रिसोर्स. लास्ट इज रिजर्व. दे आर द सबसेट ऑफ स्टॉक विच आर यूज्ड विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज, बट इट हैज़ बीन kept फॉर द future to use. For example, water in lakes, dams, forests, etc. are a reserve which can be used in the future.